Good morning, dear students. I am Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School. Today we are going to start with the new chapter, chapter number 15, Our Environment. So, first of all, you must understand what is environment. You must have heard about environment around us, like the environment is changing or the environment is not good to be here, और घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं बहुत बदलाव आ गया पहले वाला, पहले कुछ और तरह का एनवायरनमेंट था, अब कुछ और है. सो एक्चुअली कुछ भी सब आपके आसपास के जितने भी फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या इंटरनल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, आपके आसपास सब है, दैट ऑल इज इंक्लूडेड इन द एनवायरनमेंट. नाउ तो जितनी भी लिविंग कंडीशंस देखिए एंड कंडीशंस दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म, सो जितने भी आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं चीजें, ऑल दैट विल बी कॉल्ड एज द एनवायरनमेंट. और इन्हीं के आगे ही सब लिविंग और नॉन लिविंग के ही सारे कंपोनेंट्स हैं फाइनली, जो कि हम स्टडी करते हैं. सो जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं दे विल बी कॉल्ड एज बायोटिक, एंड जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं दे विल बी कॉल्ड एज अबायोटिक. और बायोटिक एंड अबायोटिक फाइनली इंटरैक्ट करते हैं आपस में टू मेक द लाइफ पॉसिबल. एंड दिस इंटरैक्शन, एक जोन जहां पर की इंटरैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ecosystem. Now, first of all, we are going to discuss what happens when we add waste to our environment. सो वेस्ट जब भी हम ऐड करते हैं, बहुत सारा अलग अलग तरीके का वेस्ट है. अगर आप एक एक्टिविटी गिवन है इन द एनसीईआरटी कि आप अपने घर का एक दिन का वेस्ट देखो क्या जनरेट होता है, तो यू विल हैव द पॉलिथीन बैग्स आपके घर से जनरेट हो रहे हैं, या फिर मिल्क पैकेट जनरेट हो रहे हैं, या जो मेडिसिन हैं उसके जनरेट हो रहे हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं. सो देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट विच विल बी जनरेटेड. So now what you have to see is you have to categorize them into two different types, that is biodegradable and non-biodegradable. Now you must understand what is biodegradable and what is non-biodegradable. Now the definition that you know so far, that is biodegradable are the ones which can be decomposed by the activity of living organisms are called biodegradable, and the substances which cannot be decomposed by the activity of living organisms are called as non-biodegradable. Now here in the NCERT, there's another very, very important point that you must understand, that is why some things are biodegradable while others are non-biodegradable. कुछ चीजें biodegradable है, living organism उन्हें break down कर सकते हैं, और बाकी चीजों को नहीं कर सकते. तो क्यों नहीं कर सकते? What's the reason? The reason is that living organisms can decompose only those things against which they produce एंजाइम्स. सो ये चीज हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग द चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की, अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड को अलग अलग एंजाइम्स ब्रेक डाउन कर रहे हैं. तो जितनी भी चीजें जिनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स विल बी कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल, और जिनके लिए कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, एंड दे विल बी कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Now, they are decomposed into harmless substances by microorganisms like vegetables, fruits, pulses, cereals, cotton, jute, wool, wood, leather, paper, animal dung, animal bones. And non-biodegradable are the waste which are not decomposed by the microorganism. And now you know why they are not decomposed, because there are no enzymes which are released by the living organisms to decompose them. So synthetic rubber, synthetic fibers, polythene bags, plastics, insecticides, pesticides, these all are non-biodegradable. Next is ecosystem, as we are discussing, and what are its components. Now ecosystem consists of all the living organisms in an area along with the non-living components. So हमने अभी डिस्कस किया था दो components हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. तो दोनों ही जब इंटरैक्ट कर रहे हैं टू मेक द लाइफ पॉसिबल, that will be called as ecosystem. Ecosystems are divided into two types, natural ecosystem and artificial ecosystem. Natural, as you know, जो man-made नहीं है, जो naturally present है, जैसे deserts, grasslands, mountains, ponds, lakes, these are called as natural. And artificial, which are man-made, which are generated by man, like garden, park, crop field, aquarium, these are called as artificial ecosystem. इकोसिस्टम के टू मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, बायोटिक जिसमें कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स क्या है? नाउ दीज आर द ग्रीन प्लांट्स, वो ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय फोटोसिंथेसिस. एंड एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना फूड, उनके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं,
all of them are consumers. So consumers which depend upon producers directly or indirectly. जैसे herbivores है, they depend directly on the plants, directly plants पर depend करते हैं. Similarly carnivores herbivores पर depend करते हैं, they eat small carnivores को eat करते हैं या फिर herbivores को eat करते हैं. Then there are omnivores which eat both plant products as well as animals. नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रेक डाउन the living matter, some substances, biodegradable substances, into simple substances. So these will be called as, these microorganisms will be called as decomposers. So look here, they are the microorganisms which decompose dead plants and animals. They decompose complex organic substances into simple inorganic substances in the soil, which are again used by the प्लांट. सो यहाँ से आपको इसके यूजेस भी पता लग रहे हैं डीकम्पोजर्स के. थोड़ा केयरफुली रीड करेंगे तो दो इसको यहाँ पर टू इंपॉर्टेंट रोल्स आ जाएंगे. व्हाट आर द रोल्स प्लेड बाय डीकम्पोजर्स? सो टू रोल्स विल बी प्लेड बाय डीकम्पोजर्स. वन, दे डीकम्पोज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो जितना भी हमारा वेस्ट है, अगर ये नहीं होंगे तो द वर्ल्ड वुड हैव बीन अ हीप ऑफ डेड बॉडीज. प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेड बॉडीज इकट्ठी होती रहती, डीकम्पोज नहीं होती. बट डीकम्पोजर्स की वजह से जो डीकम्पोज होता रहता है चीजें, उसकी वजह से चीजें सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनते रहते हैं. सो दैट्स वन रोल. सेकेंड रोल वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दे अगेन, अब ये फिक्स कर देते हैं वापस सारे सब्सटेंसेस को इनटू द सॉइल. अब ये सॉइल से ही वापस फिर सारा साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा, जिसमें कि प्लांट्स फिर से सॉइल में से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेंगे, उसे फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करेंगे और नई फूड को प्रोड्यूस करेंगे. So decomposers are playing two very important roles. One, decomposition of the organic substances, and two, they help in fixing the nutrients back into the soil by the biogeochemical cycles. नेक्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट जिसे हमने डिस्कस किया, नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, दे आर कॉल्ड एज अबायोटिक. नाउ व्हाट इज अ फूड चेन? अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू नो ऑलरेडी. फूड चेन जिसमें हम बात करते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी, जो फूड और एनर्जी का फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट. और स्टार्ट हमेशा कहां से होगा? इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर विल ऑलवेज फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. और एंड हमेशा कहां पर होगा? एक कार्निवोर पर एंड होगा. सो इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच there is a flow of food and energy from one organism to the next. And then we have example here, grass is eaten by deer, deer is eaten by lion. So this is a simple 3-step food chain in which the producer is grass, then the primary consumer is deer, and the secondary consumer is lion. Now here you can see another food chain in which grass is being eaten by insect, which is being eaten by frog, which is being eaten by snake. Now snake can be eaten further by hawk. Now this can be a 4-step food chain in which there is producer, a primary consumer, a secondary consumer, and a tertiary consumer. Similarly here you can see grass is eaten by moth or a grasshopper, which is eaten by a frog, frog is eaten by snake, and which is eaten by a hawk. But howsoever you learn, you will always find food chains to be consisting of not more than 4 to 5 steps. They will have maximum of 4 to 5 steps. इससे ज़्यादा long food chains environment में, ecosystem में नहीं होती हैं. And that's a very important question, why there are only 4 to 5 steps in a food chain? Because of the 10% law. What does 10% law state? 10% law states that the amount of energy which is available at the previous trophic level, only 10% of this energy will be transferred to the next trophic level. So supposingly I have 10,000 joule of energy for the plant, then only 10% of the 10,000 will be passed on to the herbivore. And similarly, whatever will be available to the herbivore, only 10% will be passed on to the secondary consumer, and so on. So there are lesser number of steps in a food chain because the amount of energy goes on decreasing. So this is a food chain in which the first trophic level is called as the primary producer, then we have the primary consumer, then the secondary consumer, the tertiary consumer, and the top carnivore, or we call as the quaternary consumer. Now they have given here
the sample food chains in the grassland, in the pond, and in the ocean. So these are given in the NCERT also. This you have to make in your notebooks. So grass is eaten by grasshopper, by rat, by snake, and by hawk. Similarly, in a pond, the algae is being eaten by mosquito larva, by dragonfly larva, by fish, and by raccoon. Similarly, in an ocean biome, the phytoplanktons are eaten by zooplanktons, which is eaten further by fish, and then by a seal, and then by a white shark. So these are the sample food chains which are given here. Now, what is a food web? Now, in a ecosystem, you cannot, अब आप ये नहीं बोल सकते कि grass is eaten by deer. Grass will be eaten by deer. It will be eaten by many other herbivores, even by a grasshopper, or by insects, or by cows and buffaloes and zebra and so on. So one organism can be eaten by multiple organisms. So this is an interconnected network of food chains present in the ecosystem, which is called as food web. So it is a group of several interconnected food chains. In a food web, the organism gets food from more than one group or organism. Now, this is a food web in which the plants can be eaten by different types of organisms, which can further be eaten by many different types of animals. Now, what is a trophic level? Each step in the food chain where transfer of food and energy takes place is called as the trophic level. Now, the trophic level we have here is one that we are talking about. That is, there is another transfer of food and energy takes place through the trophic level. The first trophic level, as we have discussed several times, consists of always the producers. So जितने भी हमने डिस्कस किए, चाहे वो pond ecosystem हो, ocean ecosystem हो, or it is grassland, or it is forest, any ecosystem you discuss, the first trophic level will always be producer. The second trophic level पर जो भी organism present होंगे, they will be called as the primary consumer. Similarly, on the third trophic level will be called as secondary. The fourth trophic level will consist of tertiary. So from one trophic level, there will be transfer of food and energy from one trophic level to the next. And since the transfer of food and energy decreases at every trophic level, this is what we discussed, this is called as 10% law. So the number of trophic levels are limited and do not exceed 4 or 5. So that's how you can see from producer, the amount of energy goes on decreasing. So this is called as the energy pyramid, in which the producers have the largest amount of energy, and then the amount of energy goes on decreasing from primary consumer to secondary to tertiary. So that's the pyramid of energy. Now, here you can see the pyramid of number also. If you see, in the producers will have the largest number, and similarly the number goes on decreasing to the top. So always you will find कि हमेशा जंगल में जितने भी अगर प्लांट्स हैं उनसे कम हर्बीवोर्स होंगे, हर्बीवोर्स से कम प्राइमरी कार्निवोर्स, और प्राइमरी कार्निवोर्स से भी कम जो लायंस, टाइगर्स, जो टॉप कार्निवोर्स हैं उनका नंबर हमेशा कम रहेगा. एनर्जी फ्लो, ग्रीन प्लांट्स हमेशा जितनी उनको अवेलेबल रहती है एनर्जी, उसका सिर्फ 1% यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस इज नॉट 10% लॉ. दिस इज the law only for plants कि plants कितना amount of energy use कर रहे हैं. They can use only 1% of the energy. जितना उनको solar energy जितना उन तक पहुंच रहा है उसका सिर्फ 1% वो use कर रहे हैं for the photosynthesis. And during the transfer of energy, now this is what we call 10% law, that 90% energy is lost to the environment and only 10% is transferred to the next trophic level. So this is called as the 10% law. Now, so there is decrease in the amount of food energy transferred at every trophic level by 10%. This is known as the 10% law. So here you can see if there is 100,000 units of energy at the producer level, then it will be 100 at the primary consumer, 10 at the secondary consumer, and only 1 unit of energy which will be available to the top carnivore. So that's how we say that the amount of energy goes on decreasing. And similar is the population, as you can see here. The population also goes on decreasing. So if you are asked to draw the pyramid of number or pyramid of energy, you will draw a similar pyramid to explain both these steps.